मैं मनीष देसाई हूँ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली। जैसे आप जानते हैं, IIMc जो है ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का मेन ट्रेनिंग एकेडमी है। हालांकि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ट्रेनिंग अलग अलग जगह भी होती है, परंतु यहाँ पे वो 9 months इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। Indian Information Service, as you know, is the main media service of the Government of India. It is the officers of Indian Information Service who function as spokespersons of different ministries and who also look after various media activities of Government of India, be it advertising, be it newspaper verification and registration, be it film festivals, be it film certification, a lot of areas. Most of the activities of Ministry of Information and Broadcasting, the functional activities of Ministry of Information and Broadcasting are looked after by the officers of Indian Information Service. Indian Information Service has 2 categories. The Group A service is a service from the civil services. The recruitment takes place from the civil services examination, and it also has a Group B service where officers or journalists or the persons with some kind of a media and journalistic exposure are recruited for specialized jobs. The recruitment for the Indian Information Service Group A takes place through the Common Civil Services Examination, and it is one of the sought after services in a sense because it offers a wide variety of jobs. The job content is very rich in the Indian Information Service. और जैसे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स अपना फाउंडेशन कोर्स ख़त्म करके मसूरी हो या नागपुर एकेडमी हो या बड़ौदा हो या पुलिस एकेडमी हैदराबाद में हो, जहाँ कहीं भी हो, अपना फाउंडेशन कोर्स जब ख़त्म करके प्रोफेशनल कोर्स के लिए आते हैं तो उनका मेन ट्रेनिंग जो होता है वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में होता है। यहाँ हम उन्हें अलग अलग तरह के ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में ग्राउंडिंग देते हैं, कंसेप्चुअल ग्राउंडिंग थ्रू थियोरेटिकल एक्सप्लेनिंग ऑल द कंसेप्ट्स एंड थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन। थियोरेटिकल ग्राउंडिंग के बाद में हम उनको काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स भी देते हैं बाय कैरिंग आउट डिफरेंट अटैचमेंट्स। वी अटैच देम विद द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, विद द फिल्म फेस्टिवल्स, विद फील्ड पब्लिसिटी, जहाँ पे आजकल ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन जो आउटरीच एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इस तरह हम लोग उन्हें बहुत सारे अटैचमेंट्स देते हैं। वी ट्राई टू गिव देम अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अलॉन्ग विद दैट, during the course of training in the Indian Institute of Mass Communication, we also call experts from different academies to teach them about governance, about accountability, about the budgeting, audit, secretarial practice, etc. और इन्हें बजट असाइनमेंट होता है, इनका अटैचमेंट विद द नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेस्टिवल के साथ होता है। इस तरह इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इवेंट मैनेजमेंट भी हम देने के कोशिश करते हैं। IIMc का जो फाउंडेशन कोर्स जो ख़त्म होता है, फाउंडेशन कोर्स के बाद में हम हमारे ऑफिसर्स को, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं, इन्हें एक चुने हुए मीडिया यूनिट में अटैच करते हैं फॉर 6 months. I mean, this is a long-term training where, I mean, we have introduced it newly, where the new officers will be working on a particular project. अभी हाल ही में जो इंफॉर्मेशन सर्विस का बैच जो है, उन्हें हम DVPT में अटैच किए हैं, जहाँ they are working on a project on how to assess the impact of outdoor publicity. And 1 or 2 officers have been attached with the publications division, where they are working on an entire gamut of project of digitization of books, that is production of e-books, etc. और कुछ दूरदर्शन में कुछ experimental projects में हैं, and some of them have taken projects in outdoor communication, outreach communication, interpersonal communication, etc. So ये जो मॉडल है, जो 6 months मॉडल, ये इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, and I think the initial results have been quite positive about it. And once they complete their entire 2 years of training, which also includes 9 months of theoretical and classroom training, plus attachments,
and hands-on the job experience, these officers are ready to be posted in different media units of Government of India under the Ministry of Information Broadcasting. Some of them join even the Prasar Bharati Corporation news wing, manning the Doordarshan and All India Radio's news services. Some of them go and join the Press Information Bureau, which functions mainly as spokesperson for government ministries. और कुछ लोग regional postings भी opt कर लेते हैं, because nowadays the Government of India has expanded its outreach activity. Now we have got a lot of we have strengthened the regional offices across India. हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने रीजनल सेंटर में, रीजनल लेवल में इंटीग्रेटेड पब्लिसिटी, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन के ऊपर जोर दिया है. उसी के तहत वी हैव स्ट्रेंथेंड all our regional offices. So a lot of officers may also find very substantive and important positions in regional postings. So there it opens up a lot of these things, and there is a lot of variety in the service, and I think the kind of variety and something to do new every time in every posting is what lures many officers to this information service. Thank you.